Assalamu alaikum. So every child that is born is born free and creative in the world. ये बात नहीं कि अमेरिका में या स्वीडन में ज़्यादा क्रिएटिव बच्चे पैदा होते हैं और यहाँ के बच्चे क्रिएटिव नहीं होते. बट लेट्स से जब पाकिस्तान में कोई बच्चा बॉर्न होता है तो मोस्टली दे आर बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली और उसके कान में हम अजान देते हैं एंड दैट वो उसके थ्रू वो बच्चा दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है. और दैट मीन्स कि देयर आर सर्टेन बाउंड्रीज एंड वैल्यूज़ दैट अपर किड हैज़ टू अडेयर टू. और अगर वो उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करेगा तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा. बट वी ऑल नो कि दुनिया में रहने के लिए देयर आर सर्टेन वैल्यूज़, certain standards you have to go by, you have to have certain principles. So of course you have to have some kind of boundaries in your life. But then there are societal values as well. So society comes up with its own kind of pressures on a kid. So for example, what kind of dressing you're going to do, what kind of mindset you can have, or what kind of actions you will perform. For example, I have a employee from tribal areas of KPK. And he has to have a mustache because he will not be accepted in that society if he doesn't have facial hairs. So even in Punjab villages, you have that, much nahi te kuch nahi kind of a mentality. So it's not a man's decision to have a mustache or not. It's enforced by the society, so you don't have that choice. Similarly, then there are friends and family expectations. So your family comes up and decides about your education choices, about what kind of careers you're going to choose, even where you're going to marry. So it's mostly not the choice of the individual himself. And then even with the friends, they, in order to gel in, to look cool, you have to kind of be in a certain way. So with your friends and family, you have all these expectations, and choices are oftentimes theirs, not yours. Next. And then there are so many other kind of such limitations, boundaries, which kind of dictate to you how you're going to live your life. And in the end, so for example, you go to school, colleges, offices, bureaucracy, everywhere you have those kind of limitations. And in the end, when a kid grows up, there's no space for his own self. He's basically living a life that is dictated by others. And in that kind of process, a person loses his originality. So for example, what happens is, in Islam, I give you so in the end, a kid becomes वो बंदा जो कुएं का मेंढक बन के रह जाता है. So kind of, he only has that much of a space for himself. And oftentimes, अगर वो so if the limitations and boundaries are as clean as this, it may still be livable. But हम तो वो पैदाइशी ठप्पे वाले मुसलमान हैं. We have never read the Quran or our own religion. We don't know. हमें तो जो मौलवी साहब कहते हैं हम वो करते हैं. Similarly, we don't feel connected to our grassroots, our background, history, our culture. So हमें तो society में भी जो dictate किया जाता है, हमारे घरों से जो पता चलता है हम वो करते हैं. So in the end, we don't understand all these boundaries as it is. So हमारी boundaries इस तरह से हैं. Often they are very vague. We would not know कि certain thing is coming from a religion or society or a family or where. And in the end, these are often conflicting as well. By conflicting, I mean you can either do one or the other, but you don't have a choice to leave either one of them. I just give you a small example. Our religion, for example, tells you, a kid, that he cannot have an extramarital relationship. But there's a way. You can marry early. So he's like, okay, my religion tells me to marry early but not have extramarital relationship. But then your family tells you cannot marry early because you have to set up a career and everything. So that's not a choice you have. And then a person and society doesn't give a good answer to that kid as well. So in the end, what does kid do? He
poses to be a good person in front of everyone. So in front of Maulvi Sahib, he says, I'm a good Muslim. I don't have any relationships. In front of his father, he says, I'm just focused on my career or education. I have no other needs. In front of every other, he just takes he has all these different faces in front of different people. And the reality of his own self is just known to him. So he basically is kind of वो एक मुनाफिक सा नहीं एक बंदा बन जाता कि वो खुद ओरिजिनल सेल्फ उसका किसी के सामने नहीं है, बट उसके these faces हैं. आपको कैसा चाहिए? मौलवी साहब कैसा बंदा देखना चाहते हैं, मैं वैसा बनूंगा. मेरे अब्बा जी कैसा देखना चाहते हैं मुझे, मैं वैसा बन जाऊंगा. बट एक्चुअली मैं वो नहीं हूँ. सो इससे होता क्या है नेक्स्ट, और इसका आपसे कनेक्शन क्या है, स्टॉक से कनेक्शन क्या है, कॉर्पोरेट कल्चर से कनेक्शन क्या है, कि अब नाउ एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इनोवेशन, और जो सोसाइटी वी हैव क्रिएटेड इज नॉट बिल्ड फॉर इनोवेशन. ये जब इस सारी मिल से गुजर के एक बच्चा निकलता है तो वो क्या होता है, वो एक ज़हनी गुलाम होता है. इज़ अ मेंटल स्लेव. वो जो उसको ऑर्डर मिलते हैं वो फॉलो करता है. ही डजंट हैव हिज ओन, ही डजंट हैव गट्स टू टॉक और से नो. एक गुलाम बंदा कभी नो नहीं कह सकता, एक गुलाम बंदा कभी क्वेश्चन नहीं कर सकता. ही हैज़ टू फॉलो ऑर्डर्स. और वो गुलाम बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो वो क्या करेंगे, फॉलो ऑर्डर्स. वो कहते हैं आप बताएं आपको क्या चाहिए, मैं वो बन के दिखाता हूँ. खुद वो क्या है, आई से आई नीड योर पर्सनल बेस्ट, वो तो उसने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया. सो होता क्या है कि वो हमें कंप्लायंस ओरिएंटेड लोग मिलते हैं, और वी काइंड ऑफ हिपोक्रेट्स कह लें कि वो दे आर नॉट टॉकिंग द ट्रूथ ऑल द टाइम. एजाइल में, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में यूल सी के ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रूथ इज़ अ की वैल्यू जो कि हमारे लोगों में अनफॉर्चुनेटली उनसे स्वीडन और अमेरिका वालों से बहुत ज़्यादा नीचे है. सिमिलरली ओरिजिनलिटी नहीं होती. सो हम लोग फिर क्या करते हैं, लो वैल्यू वर्क करते हैं. ड्रजरी के लिए हमें समझा जाता है मजदूरी के लिए ये अच्छे लोग हैं, क्रिएटिव और इनोवेशन के लिए अच्छे नहीं हैं. डिज़ाइंड इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चाइना. हम असेंबली करने वाले लोग हैं, पेज कसने वाले लोग हैं. वी आर नॉट पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू डू द क्रिएटिव वर्क्स और इनोवेशन फॉर द वर्ल्ड. एंड दिस इज व्हाट नीड्स टू चेंज, अदरवाइज वी कैन नॉट इनोवेट. नेक्स्ट. सो हमें चेंज करना है यस सर कल्चर. और ये जो यस सर कल्चर है, यू नो, हमें मेरे क्लाइंट्स अमेरिका में, स्वीडन में है, वो दे कंप्लेन कि यार ये जो इंडियंस हैं, इंडियंस को वो ज़्यादा जानते हैं. इंडियंस हर बात पे यस सर कह देते हैं. सो मैं वट एवर वी टेल देम दे से यस सर, एंड में वो काम खराब हो जाता है. कहते हैं आपने तो कहा था. इवन दो दे आर द एक्सपर्ट्स एंड दे कैन टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, बट दे डोंट डेयर टू. सो दैट्स अ कल्चरल प्रॉब्लम वी हैव, दिस यस सर कल्चर. और ये गोरा छोड़ के गया हमारे मुल्कों में, हमें ज़हनी गुलाम बना के गया. नेक्स्ट. और उसके लिए हम कॉमन रेमेडीज़ क्या ढूंढते हैं अपने कंपनीज़ के अंदर, कि अच्छा कम्युनिकेशन से लोग डरते हैं तो ओपन डोर पॉलिसी कर देते हैं. हम कहते हैं कि चलें वो ओपन हॉल कर लेते हैं ताकि टॉप से कनेक्ट हो जाएं लोग डायरेक्टली. और फूटबॉल टेबल रख लेते हैं, टेबल टेनिस रख देते हैं. मगर ये सतही चीज़ें हैं. एक बंदा जब वैसे ही मेंटली डरता है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के चैंपियन भी अपने आप को डिक्लेयर करते हैं, उसके सीईओ को मैंने एक मेल की तो अ पर्सन वाज वेरी अनॉयड कि यू बाईपास्ड एंड दिस एंड दैट. मैं कहा आई एम वेरी सॉरी, आई बाईपास्ड, बट इन माय ऑर्गेनाइजेशन वी हैव अ फ्लैट कल्चर. नो, सो हम तो एक पीएनबी ऑफिस बॉय सीईओ से बात करते हैं तो कोई पूछता नहीं कि तुमने क्यों बात की उससे. तो जब मैंने एजाइल का रेफरेंस दिया, उसने कहा हाँ हम भी बड़े एजाइल हैं, और हम तो सीईओ तो मेरे टेबल पे बैठता है. तो मैं क्या फिर प्रॉब्लम क्या है इन द कम्युनिकेशन. नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो वैसे ही कह रहा था. सो उस ओपन हॉल का क्या फ़ायदा जहाँ पे सीईओ से वो बात करने के काबिल नहीं है लोग, या वो अपने आप को सेंसर करके बात करें. इट्स अ माइंडसेट प्रॉब्लम. सो ये सतही जो चीज़ें हैं, ये हमारे डीप रूटेड इश्यूज़ को सॉल्व नहीं कर सकती. नेक्स्ट. सो व्हाट नीड्स टू बी डन इज़ वी नीड टू ब्रेक ऑल दीज वॉल्स. Not open door, just break the wall, take down the wall, not create a interface, just kill the communication protocols. Bring everyone to the social media instead of emails. Bring everyone, so we, and then have, break the structures. Just create flat structure. But it's easier said than done. Next. When we started on this direction in 2012, we faced huge resistance in the organization. When we said there is going to be a flat and fun organization, and we will just
we got a lot of pushback from our own employees. I felt they would be happy that we are being empowered. Instead, they were very concerned. And they felt that they were being, a lot of our employees in our organization worked very hard. They idealized a sir in our company. And they wanted to be that sir. They worked for that. And when they were close to achieving that position, where others would be reporting to them, we said, there's no sir in the company, no titles, everyone is working as a team. So then they had to, they felt if we are seniors, we are only seniors when there are more juniors under us. So then we had to kind of, and then of course there are other insecurities as well. Next. So we had to get help from, we had to do a lot of cultural things. One of those things was introduction of Sir Carr. Sir Carr came to our help to fix this mindset issue. There's a 1-minute video I want you to see. DPL में सर का लफ्ज इस्तेमाल करने पे पाबंदी। 400 रुपए। अरे ये किधर से आ गया, निकालो इसे यहाँ से। सरकार की आमद। अब जो एम्प्लॉय सर के नाम से एक दूसरे से मुखातिब होगा तो उससे 50 रुपए का जुर्माना। सर 400 रुपए। सर 50 रुपीस। सर 50 रुपीस। ये क्या सीन है? सर कड्डो 50 रुपया। सर 50 रुपीस। व्हाट? सर बेचारे को 50 रुपया। सर 50 रुपया। सर 50 रुपए। ये ले 50 रुपए। सर 50 रुपीस। कल से नागा प्लीज। After listening to employees, we came to the conclusion that they don't know jack shit about surf culture. 50 रुपए। Abhi baksh bhi de. Cameraman Atar Abbas ke saath, Ghas Mukhtar, DPL News. So we introduced this sir in our company. He's a typical British kind of a gentleman, and he's the only sir in our company. He does not share this title with anyone else. If you call anyone else a sir, this person hates it and charges you 50 rupees fine for that. And it's just one of the many other things we did in our company that helped change that mindset, and people didn't want to be like Sir Carr. They wanted to be more self-confident in their own value and everything. And because of this, I think this and many other things, when CEOs came to our company, they couldn't help but notice that the employees had a certain level of confidence in our company that they didn't change their screens when the CEO was there. And they were even, a lot of employees, they could even challenge the CEO when they feel things are not getting right. And afterwards, many CEOs came to us and they requested help of Sir Carr in their own company as well. And I think you as leaders, all of us need to create this counterculture revolution in Pakistan that can liberate minds of our people from the Gora culture and bring that confidence that is required for innovation and digital transformation in Pakistan. With that, thank you very much.